we are now discussing the femoral nerve. Now before discussing any nerve, we talk about its root value. The root value L2, L3, L4. ऐसा कौन बोलता है? उस कॉलेज के लोग जहाँ पे कभी लेक्चर होते हैं कभी नहीं होते हैं, वहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट में एक दो स्टाफ मेंबर्स है और परमिशन मिला है, कॉलेज चालू है, हमको डॉक्टर होना है, कैसे कैसे करके किधर भी चलेगा, नहीं सीखने को मिला तो उधर लोग ऐसा आंसर देते हैं L2, L3, L4। आप में से अगर किसी ने ऐसा आंसर दिया तो मैं आपको उस कॉलेज में भेज दूंगा, क्योंकि आपसे ऐसा एक्सपेक्टेड है मुझे कि डॉर्सल डिविजन्स ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, dorsal divisions of anterior primary rami of L2, L3, L4। फिर जब आप एग्जाम में पूछेंगे, ये बोलेंगे तो मैं आपको पूछूंगा why dorsal divisions? Because dorsal divisions always supply the extensors। femoral nerve यहाँ पे जो मसल्स है, नी, थाई का एंटीरियर कंपार्टमेंट, these are all extensor। किक मारते हैं ना, हाँ किक मारते हैं, so these are all extensors, so dorsal divisions। Why anterior primary rami? Because it is the anterior primary rami which form the plexus. Posterior rami don't form the plexus, they go and supply the extensor compartment muscles। अगर एग्जाम में किसी ने बोला रूट वैल्यू L2, L3, L4 तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। हम लोग रेकमेंड करके MUHS में जाके बहुत मदद करेंगे हम आपको ट्रांसफर लेने में, विल हेल्प यू गेट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? डॉर्सल डिविजन्स ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, डॉर्सल डिविजन्स आल्सो। फिर एक अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, डॉर्सल डिविजन्स, व्हाई डॉर्सल डिविजन्स? बिकॉज दे सप्लाई एक्सटेंसर्स एंड एब्डक्टर्स। वेंट्रल डिविजन सप्लाई flexors and adductors। upper limb में आपने देखा ना, radial nerve was formed by the union of 3 dorsal divisions, therefore it is supplying all the extensors। it is the largest branch of lumbar plexus। introduction में लिख बोलो, introduction उसके पहले, largest branch of lumbar plexus, largest branch of lumbar plexus। रूट वैल्यू ये, ओके। उसके बाद हम क्या देखते हैं? कोर्स, ओके। सो लेट अस डिस्कस द कोर्स। मैं यहां से चालू करूंगा, यहाँ पे कोर्स खत्म हो जाएगा। कोर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लंबार प्लेक्सिस। The lumbar plexus is in abdomen, so this you will not be able to see in the lower limb dissection। So starts from the lumbar plexus, then it enters the body of psoas major muscle, but does not supply the psoas major, muscle, enters the body of psoas but does not supply the psoas major muscle, and then it emerges at the lateral border of psoas major muscle, emerges at the lateral border of psoas major muscle and descends down। okay, so it is descending down, uska descends down, and then ये आगे continuation है, it crosses the
inguinal ligament. Crosses below the inguinal ligament. Okay, crosses below the inguinal ligament and enters the thigh. Enters the thigh. Crosses below the inguinal ligament and it enters the thigh. समझ रहे हैं? एब्डोमेन में कोर्स चालू हुआ. श्वास मेजर एब्डोमेन में है. On the other side, on the outer sides of the vertebral column there are two श्वास मेजर. उसके अंदर से वो लैटरल बॉर्डर से इमर्ज होके, ओके, लैटरल बॉर्डर से इमर्ज होके यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट से एंटर किया थाई में. where it lies lateral to femoral artery and femoral sheath. Lateral to the femoral artery and femoral sheath. It lies outside the sheath. Okay, it lies outside the sheath. And then after a course of 2 centimeters in the thigh, it divides into anterior and posterior division. It divides into anterior and posterior division, which are separated by lateral circumflex femoral artery. It are separated by lateral circumflex femoral artery. Okay, you are with me here? So I repeat again, the course starts in the lumbar region. It lies in the largest branch of lumbar plexus, lies in the substance of psoas, emerges along the lateral border of psoas major. Okay, then descends down, crosses the inguinal ligament, lies lateral to the femoral artery, and then after a 2 centimeter course divides into anterior and posterior divisions, which are separated by lateral circumflex femoral artery. Okay, now let's try to draw this. I am not yet talking about the branches. So this is, suppose this is L2, L3, L4. These are the dorsal divisions. It is formed. Okay, is lying in the substance of the psoas. This is psoas major. Okay, so lying in the substance of the psoas major muscle, it is then emerging along the lateral border. Okay, so this is the lateral side. So anterior superior iliac spine यहाँ पे रहेगा. Okay, यहाँ से करेक्ट ना, मीडियल साइड पे, बिकॉज इलियोवर्टिब्रल कॉलम हमारा मीडियल साइड पे. So now it is entering the, it is crossing the inguinal ligament and it is entering the thigh. Here this is the femoral sheath, this is the femoral artery. Okay, यहाँ पे femoral vein. अंदर आके it divides into anterior and posterior division. Now this is kind of a schematic diagram. Schematic diagram मतलब अभी इसमें मैं anterior posterior ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ, इसके लिए मैंने ऐसा दिखाया है, और इसको मैं anterior बोलता हूँ, इसको मैं posterior बोलता हूँ, और ये है बीच में lateral circumflex femoral artery. ये जो बीच में मैंने सर्कल निकाला है, this is lateral circumflex femoral artery. Okay, anterior division and posterior division. Now what happens is before entering the thigh, it gives 2 branches. One is nerve to pectineus muscle. Another is nerve to iliacs. इन दोनों को पहले ही ब्रांच दिया है before entering the thigh. In the femoral triangle, now it has divided. Anterior division is कोपऱ्यातला म्हणता, एकदम कोपरा. हाँ, डोळे उघड इकडे बघ माझ्याकडे. Anterior division
is all sensory. Is all sensory. Okay? Only one motor branch. Posterior division is all motor. Only one sensory branch. Okay? All sensory, one motor, anterior. All motor, all branches of motor except one is sensory. तो इसकी जो मोटर ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन की, it will supply one muscle and that is sartorius. 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 Sartorius मसल जो यहाँ से ऐसे 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 जाता है यहाँ तक नीचे, नीचे जाके टिबिया पे अटैच होता है. तो उसका एक्शन क्या रहेगा? लैटरल रोटेशन. लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई, फ्लेक्शन ऑफ द नी. बाकी के ब्रांचेस ऑफ द femoral nerve they are sensory. So what are those branches? Medial cutaneous nerve and of thigh and intermediate cutaneous nerve of thigh. और एक lumbar plexus से branch आएगी directly, that will be lateral cutaneous nerve of thigh. That comes directly from the lumbar plexus. So the anterior division इथे कोपऱ्यामध्ये कोण है? Anterior division with me ना बेटा, आप मेरे साथ हो. So anterior division has two sensory branches. What are those? Medial cutaneous nerve of thigh and intermediate cutaneous nerve of thigh, and it has one motor branch, that is nerve to sartorius. Posterior division उल्टा है, उसकी एक ही sensory branch है, and that is the saphenous nerve. Saphenous nerve. Saphenous nerve. Saphenous nerve, saphenous vein हमने सुना, ग्रेट saphenous vein. जो कि ग्रेट क्यों बोला है उसको? ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे एंड होती है. इतना बड़ा कोई वेन नहीं होता है बॉडी में. ये ग्रेट saphenous vein is used for cardiac bypass. बाईपास में जब हार्ट में ब्लॉक होता है, okay, whenever there is a block in the heart, so वो saphenous vein लेते हैं और ब्लॉक के इस साइड से इस साइड ऐसा कनेक्ट करते हैं. ग्रेट saphenous vein का छोटा टुकड़ा. Okay. So now we are talking about saphenous nerve. The saphenous nerve is also the longest cutaneous nerve in the body. जब वो शुरू यहाँ से होता है और वो भी जाता है, सप्लाई करता है मीडियल साइड ऑफ द शिन, मीडियल साइड ऑफ द लेग, वहां से लेके मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट अप टू द बॉल ऑफ द ग्रेट टो. मतलब वो यहाँ पे नहीं सप्लाई करेगा, थाई में कहीं नहीं सप्लाई करेगा. इट विल गो एंड सप्लाई द मीडियल साइड ऑफ द लेग. तो फीमोरल नर्व का कुछ अगर डैमेज होता है तो हम मीडियल साइड ऑफ लेग पे सेंसेशन चेक करते हैं, है कि नहीं. Saphenous nerve and all other branches are motor. मैंने आपको बताया था कि sartorius के अबव 4 मसल्स होते हैं, adductor longus, pectineus, psoas major and iliacus. और sartorius के नीचे 4 मसल्स होते हैं. VI, कितने लोगों का VI कनेक्शन है इधर? हाथ ऊपर करो. What is VI? श्रेयस ना? तो पहले कितना दिन से मैं रिवाइज कर रहा हूँ तेरा नाम. कृषि याद रहेगा मेरे को. तो श्रेयस, VI का फुल फॉर्म क्या है? वास्टस इंटरमीडियस. तुम्हारा क्या है कनेक्शन है मोबाइल का? सब लोग VI वाले हाथ ऊपर करो. क्या है तुम्हारे मोबाइल कंपनी का नाम? वास्टस. क्या है नाम?
वास्टस इंटरमीडियस। और कौन है, क्या है कंपनी का नाम, वास्टस इंटरमीडियस। इसके बाद अगर मैं आपको कभी भी पूछूंगा क्या तुम्हारा क्या है, जियो है क्या है, तो आप क्या बोलोगे, वास्टस इंटरमीडियस। देन देयर इज वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस। बट सबसे पहले, उसके पहले भी देयर इज रेक्टस फीमोरिस। मैंने बोला तो 4 मसल्स है, रेक्टस फीमोरिस एंड 3 वास्टाई। नाउ देयर इज वास्टस मीडियलिस, वास्टस intermedialis, vastus lateralis. Now how I'm going to talk about how rectus femoris is different from the 3 vasti. Because rectus femoris, 3 vasti, they take their origin from femur and go and get attached to the tibia. So उनका action है extension. But rectus femoris takes origin from anterior inferior iliac spine. So आपने अभी तक anterior superior iliac spine सुना था, वो तो हमारे बॉडी में यहाँ पे फील होता है। iliac crest को आगे 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 लाओगे तो यहाँ पे anterior superior inferior फील नहीं होता है, वो उसके नीचे है, वहां से। एंटीरियर सुपीरियर से ओरिजिन लेता है सार्टोरियस, एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से ओरिजिन लेता है सार्टोरियस, एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन से ओरिजिन लेते हैं रेक्टस फीमोरिस। बोथ these spines of the iliac crest, anterior superior and anterior inferior, from them one muscle and one ligament take origin. तुझे बात भी समझना। From them one muscle and one ligament take origin. Anterior superior iliac spine से the muscle is sartorius, ligament is inguinal ligament. Anterior inferior से muscle is rectus femoris and ligament is iliofemoral ligament, which is the strongest ligament in the body. It's the ligament of the hip joint. We'll discuss it later. No need to be stressed about it right now. Why I am stressing on rectus femoris कि वो हिप जॉइंट को एंटीरियरली क्रॉस करता है, इसके लिए वो हिप जॉइंट का फ्लेक्शन करेगा, और नी जॉइंट को एंटीरियरली क्रॉस करता है, इसके लिए नी जॉइंट का एक्सटेंशन करेगा। हिप जॉइंट का फ्लेक्शन, नी जॉइंट का एक्सटेंशन, हिप जॉइंट का फ्लेक्शन, नी जॉइंट का एक्सटेंशन। Therefore, this muscle is called as kicking muscle. The muscle used for kicking. फुटबॉल, कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं? हाथ ऊपर करो, शर्मा मत करना होगा, ठीक है, इट्स ओके इफ यू डोंट लव क्रिकेट, वी एक्सेप्ट यू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो इतना साल आपने किक मारा, आमिर खान ने बोला किक मारता है, लेकिन उसको भी मालूम है कि कौन सा मसल इन्वॉल्व है किकिंग में, कौन सा, रेक्टस फीमोरिस। एंड द 3 vasti are also involved, but 3 vasti are only involved in extension of knee joint. But rectus femoris प्रॉपर किक मारते समय जो अपन करते ना, बराबर ना, ऐसे ही करते ना, या खाली ऐसा किक मारते, प्रॉपर किक मारते समय क्या करते, फ्लेक्शन ऑफ हिप, एक्सटेंशन ऑफ नी। ये किसका एक्शन है, रेक्टस femoris. Very good. This whenever Hilton's law, whenever a muscle crosses the joint, the nerve supplying the muscle, whenever a muscle crosses the joint, the nerve supplying the muscle also supplies the joint. Hilton's law. Whenever a muscle crosses the joint, the nerve supplying the muscle also supplies the joint. So hip, rectus femoris hip joint को cross कर रहा है. So articular branches. The nerve to rectus femoris will also supply hip joint. While now to vastus medialis and thoda intermedialis, thoda lateralis also will supply knee joint. Will supply the knee joint. Knee joint को supply करेंगे. Knee joint लिखा है मैंने इधर नीचे. They will supply the knee joint. Is it clear? तो हमने जब नर्व्स का ये बोला था,
ब्रांचेस क्या था हमारा फॉर्मूला, मैकडी नहीं क्या था, मैकवी. So muscular branches, anterior division sartorius, posterior division rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedialis, vastus articular, hip joint via nerve to rectus femoris, knee joint via nerve to 3 vasta, mac articular, MSC, cutaneous, medial cutaneous nerve of thigh, intermediate cutaneous nerve of thigh to anterior division, and saphenous nerve via posterior. Mac V, vascular to femoral artery and femoral vein. So that's all about the femoral nerve. Clinical anatomy, femoral nerve is injured in accident, stab injury. तो क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंसर्स पैरालाइज होते हैं. Our body when extensors are paralyzed, then the flexors they become prominent. So the hip and the knee will remain in mid flex position. Because वो knee के flexors को supply करता है iliacus and psoas major. Sorry, not psoas major, iliacus. Iliacus is the flexor of the this thing. So ज़्यादा flexion नहीं होता है, but knee का mid flex position रहेगा. Because इसका flexion बाकी muscles psoas major still remains unaffected. इसके लिए hip का इतना affect नहीं होता है, but the knee will remain like this in mid flex position. इसका extension नहीं होगा. फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे sensation हो रहा है क्या, तो नहीं होगा along the medial side of leg. And along the medial, not medial, but anterior aspect of the thigh also there will be no sensation. Another applied anatomy, because वो लड़की मेरी तरफ हाँ तो स्वप्नाच्या दुनियेत गेली, कुठे गेलेली, घरी, मग कॅन्टीनमध्ये. अच्छा देखो मैं इतना कॉन्शियस हूँ ना कि कोई ऐसा ज़्यादा टाइम देखा पलक नहीं झपका तो भी मैं ये हो जाता हूँ कि बाबा क्या हो गए, चले तो नहीं गए दूसरे करके, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए. दूसरा अप्लाइड एस्पेक्ट. तो हाँ, वन गुड थिंग आई ऑल्सो अप्रिशिएट अबाउट योर बैच कि आप लोग ऐसा फुल टू यॉन नहीं करते सर. आप लोग अप्रिशिएट. आप यहाँ पे आके लेक्चर देके देखो, 150 स्टूडेंट्स हर 2-3 मिनट में एक जन यॉन करता है. और ये इंस्ट्रक्शन अगर नहीं दिया और आप दिन से सिखा रहे हो सबको देखते, तो हर 2-3 मिनट में कोई ना कोई लेक्चर. आपने अगर लेक्चर में ध्यान नहीं दिया तो ये पॉइंट आपका मिस हो जाएगा कि दिस सप्लाई हिप जॉइंट एज वेल एज नी जॉइंट. सो पेन फ्रॉम द हिप जॉइंट में बी रेफर्ड टू नी, पेन फ्रॉम नी जॉइंट में बी रेफर्ड टू हिप. मालूम नहीं हिप में पैथोलॉजी, पेशेंट आपके पास आएगा इधर दुखता रहता है, इधर दुखता रहता है. आप एक्सरे निकाला, नी का MRI निकाला, उसको 10-15 हज़ार रुपए को चूना लगाया. फिर वो रोल नंबर 151 एब्सेंट है, ऐसे डॉक्टर्स जो एब्सेंट है उनके पास वो जब पेशेंट चला जाएगा बाद में, और फिर वो सब चूना भी ना लगा के फिर वो आपके पास आएगा. क्या नाम है आपका? हाँ नहीं इसं नाव काय, तुझं नाव काय? हाँ तू हाँ काय दुर्वी. डॉक्टर दुर्वी जो प्रेजेंट इतना ध्यान से सुन रहे थे और विदाउट पल्लव झपकते हुए बोल गया, अरे नहीं बाबा सबने बताया था हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट बोथ आर सप्लाइड बाय फीमोरल नर्व. सो पैथोलॉजी हिप में हो सकता है. पैथोलॉजी कहाँ पे हो सकता है? हिप में भी हो सकता है. फिर हिप का एक्सरे निकाले हो रहे उधर इन्फेक्शन, और पेशेंट आपके पास आके बोल रहे हैं इधर दुखता है, इधर दुखता है, और नी जॉइंट नॉर्मल है बिकॉज बोथ आर सप्लाइड बाय सेम नर्व via rectus femoris, via branch to vasta. So sometimes it may be left. So this is the another applied anatomy.